और 3 दफ़ा कुल की तिलावत करके उनकी रूह को बख्श। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु बिस्मिल्लाह क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन। परवरदिगार इसका अजर उन तमाम अरवाह को पहुँचे तो इसके मुस्तहिक़। उसके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता। आज हमारे साथ गेस्ट हैं, हमारे लेफ्ट पे आप शायद पहली दफ़ा से मिल रहे हैं। उनका नाम है बिलाल अली अब्बास। जैसे कि हम बातें कर रहे थे शादी पे, यूथ पे, तो हमारा आइडिया था कि एक यूथ को भी बुलाया जाए ताकि उनका पर्सपेक्टिव भी देखा जाए ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में और एजुकेशन के बारे में। हाउ दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स ऑन अ एवरीडे लाइफ इन दिस कंट्री। तो उसको सामने रखते हुए वेलकम बिलाल टू आवर शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे अली ने कहा कि हम लोग आज यूथ को हमने बुलाया है कि थोड़ा सा हम उनसे डिस्कशन कर सकें, क्योंकि जब हम बैठते हैं हम लोग आपस में ही बातें करते रहते हैं कि भाई हम लोग बच्चों को क्या प्रॉब्लम। हम लोगों ने कभी यूथ को बिठा के, अपने बच्चों को बिठा के कभी प्रॉब्लम का उनसे पूछा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बिलाल, आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं प्लीज, तो फिर हम बात शुरू करेंगे। Assalamu alaikum everyone. My name is Bilal. I go by Ali in school. Use what people say. I'm a graduating senior at San Jose University. I'm 23 years old. I was born in Chicago, Illinois, and then my family moved out here to San Jose, California in about 2009, 2010. So I've been here about 14 years. And yeah, that's pretty much. So I'm going to school right now, but I'm also a full-time real estate agent. I got my real estate license here in California in 2018. And then I also got my real estate license in Illinois in 2021. So I've been doing that, and then I also run a few other businesses. MashaAllah, very hustler beta, I would say. He's hustling and bustling. And that's a part of life when you're young. जब आप नौजवान हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत तौफीक़ात देता है कि कामयाब हों और मेहनत करें। अल्लाह ने रिज़्क़ का तो वादा किया है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि साथ ही हुज्जत भी हो उसके साथ, तो अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है इंशाअल्लाह, और अल्लाह आपको कामयाब करे। एंड सबसे पहले तो बिलाल, आपसे ये क्वेश्चन है, यू सेड यू आर 23 year old। जी, I just माशाअल्लाह, वेरी गुड, कांग्रेट्स। आप मुझे ये बताइए कि हम जो टॉपिक है बात, उसका मौजूद था एक पिछले हफ्ते शादी। आपके ख्याल से आइडियल एज क्या है एक यूथ के लिए, एक मेल यूथ के लिए? मुझे लगता है as a लड़का like 46, 27 is a fair age. 46, 47. Yeah. It means कि आपके पास अभी 3 साल है। 3-4 years, yeah. Okay. इंशाल्लाह बिल्कुल। हमें इसको बुलाने का मकसद ये था कि हम लोग बातें इनकी प्रॉब्लम्स सुने कि भाई, क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं आपस में, जो हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे कि मैच मेकिंग इज वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा जब शादी हो जाती है तो मसले, वो तो खैर हम लोग इस और डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारा मेन ये है कि हम इससे थोड़ी सी इसकी जिंदगी के बारे में बात करें, और थोड़ा हम बात करें कि अगर हम माशाल्लाह जब इसकी एज 2-3 साल तक है, ऐसे जो आपके मुताबिक आइडिया 3-4 साल, ठीक। तो अगर वो टाइम है तो उसमें हाउ विल ही अप्रोच, इसकी अप्रोच क्या है कि इसको हम किस तरह से। बहुत अच्छा सवाल है। तो आप मुझे बताइए बिलाल, हाउ डू यू वांट टू मीट योर स्पाउस? कि आप मैट्रिमोनियल ऐप पे जाएंगे, ब्लाइंड डेट पे जाएंगे, किसी ने आपको अरेंज किया होगा, किसी रिलेटिव ने, उस पे जाएंगे, या और या आपके माँ बाप अगर कोई सूट ढूंढते हैं एंड यू मे इवन एक्सेप्ट दैट। आपके ख्याल से आपके लिए ये चीज़ क्या होगी to find a right person for your as a life partner? I feel like अभी 3-4 साल से I haven't really thought about it that much, but in this moment, this sort of like I don't like
whatever happens, happens. So. Definitely, लेकिन आपके friends भी होंगे, you must be discussing around your friends, आपके cousins हैं जिनसे आप बात करें, तो आपको आप ऐसे आप particularly चलो आपने अपना जवाब दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम आपके around जो आपके friends हैं, जो आपकी age के हैं, what you talk about कि हाँ भाई किस तरह से approach होनी चाहिए? I mean, I have friends that are on like the Muslim marriage apps. I know they do that. It doesn't really work for them from what I've seen. But like for me, like if I meet someone in person, that's cool. If Mama wants to like introduce me to someone, that's okay. Like I just feel like whatever happens naturally is gonna happen. You're open to everything. Yeah. किसी No, तरह sir, से good, good. लेकिन आप जब अपने फ्रेंड से बात करते हो, फ्रेंड सर्कल में जब आपको उनकी बात होती है, तो बेसिकली आप अगर आप जैसे आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप उनके बारे में क्या बताओगे कि एक जनरल क्या बात होती है आपको कि you don't talk about marriage कि आप बहुत छोटे हो? Well, I mean, I feel like there's like two extremes. Like one extreme is very religious, like I'm gonna go talk to the dad, like do the halal way, all that. And there's other people that are like, I'm not looking to get married. I don't want to get married. So I feel like you have to find like a middle ground. अच्छा, अगर let's say अगर आप 26 साल के हो गए, let's say you are 26 years old, what are your requirements in a life partner? I'm not 26 years old yet. Well, hypothetically speaking, अगर आप 26 साल के हैं, now you are readily seeking a spouse, life partner, आपकी क्या requirement है? आपको एक कैसी लड़की से आपको मिलना है, किससे शादी करनी है, क्या आपके आइडिया तो कुछ ना कुछ होता है ना बंदे के ज़हन में कि I want this kind of person, I want a person who wants to stay with your mom and dad or just stay with you, because these are some other discussion we've been talking about it, staying with the parents or not staying with the parents. मेरा पहला question है, first of all, आपको किस तरह की लड़की आपको चाहिए? For example. It's pretty funny you hear that. Yeah. Because I was talking to one of my friends last year, actually. They really adamant about wanting to get married right away. Me, I'm open to want to graduate, get settled down. So he's like, he made a suggestion to me. He told me I should make a list starting now of what I'm looking for in a potential wife. Okay. So I actually did make a list. I have a list. You have a list. You made, okay. Share a couple of. Do you want me to read off the list? No. Just give us a couple of. A couple of things कि आप okay, this is what you think कि ideal आपकी जो wife होनी चाहिए, उसमें ये चीज़. I don't remember. I'd have to read it because I had a moment and like sat down, like I actually like thought, like took a deep thought. Okay. All right. Okay. Definitely share it. लेकिन मेरा फिर आपसे अगला question ये होगा कि आप अगर आपने एक list बनाई है, and I think you know कि जिंदगी में तो दुनिया में हर कोई perfect है नहीं, कोई भी perfect नहीं. Because I'm saying कि आपकी अगर वो 10 फर्स्ट और आपकी चीजें हैं जो आप सोच रहे हो कि होनी चाहिए, उनमें से कितने आपकी टिक होनी चाहिए, तो आप कहोगे हाँ भाई शी इज फॉर मी. Let's say आपके पास आपकी लिस्ट में 10 आइटम्स हैं. Well, minimum 10 requirements, 10 requirements. उनमें से like me personally. Yes. Let's say for example you have 10 requirements. If you have like, okay. So you find a girl. Yes. How many minimum qualifications she needs out of 10 for you to say yes? Great question. I don't know. Okay. But like some of like examples are like I want someone that's very family. Like because very good question. There's some people out here that let's talk about that. That's a very good question. What do you mean by family oriented person? There's like I have friends that girls like I don't want to have kids, they're a headache. I don't want to live with parents, there's drama. I don't be me and my husband go move on to live together. That's it. तो आपकी राय में क्या होना चाहिए उसको कि वो आप अपने पेरेंट्स का रहना पसंद करेंगे? I haven't really thought too much into that because who knows where I'm going to be in 3 years. Yeah, but so, लेकिन preference एक thing में जैसा आप कह रहे हो कि आपके friends ने आपसे directly ऐसे बात. My cousins and like family friends I know that have been married and talked to them, they gave me a great suggestion. They told me it's great when you get married to move out and just to learn one another, and there's no privacy issues like with parents and stuff. Like you're getting to know each other. There's no drama. So at first, move out, get to know each other, and then come live with your parents after you guys both live. Very nice. So that way, there's no drama. Actually, this is one of the suggestions that we usually have for our newlyweds. Yeah, please move out for 6 months to a year. Get to know each other.
And then if you decide to come live with the parents, that's because you got to learn about each other. जैसे हमने पहले बात की थी कि लड़का लड़की came from two different worlds and they are trying to be under the same roof. तो उसके लिए कुछ problems होंगी, issues होंगे, and it's easier to resolve in one-to-one rather than there are more people involved. Yeah, good suggestion. That's a good suggestion. इसलिए कि हमारे यहाँ हम लोग actually बिलाल जिस generation से हम लोग हैं, since we are immigrant here, और हमारे यहाँ बहुत different तरीके से काम होते हैं. Family is very important. Joint families का बहुत है. तो that's why हम लोग ये question आपसे इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमने अपनी audience को बताना है कि हमारी youth क्या सोच रही है. ठीक है, आपको एक suggestion दी कि हाँ भाई live outside for 6 months or get to know each other 6 months a year. और फिर अगर आप रहना चाहोगे. And he used the word drama twice, so that has meaning actually. No, because he's right. Drama, वो इनकी language में drama. There's a lot of clash between the in-laws and Definitely. Yeah. So he's calling them drama, but that's our regular everyday life, which we live through it. Some people call it drama because he's blunt. He give an adjective of being drama. In reality, which is okay, which is absolutely fine. क्योंकि हम लोग ये सब बुलाया ही इसलिए ना कि हम आपसे बात कर सकें. You should be open to all these things. I'm proud of you कि आप अच्छे तरीके से अपनी बात बता रहे हो. That's very also this is my first time on any kind of no, it's okay. thing, so like I might mess up. I don't know. I just everyone knows my first time doing something. नहीं कोई ऐसी बात नहीं. आप भी प्लीज अगर आप लोगों में से कोई ऐसी बात हो, पहली दफा हमारा बच्चा हमारे साथ आया है, तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये है कि हम लोग being a parent जो हमारी जनरेशन के हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी यूथ क्या चाह रही है. क्योंकि कई दफा हम अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते और बच्चों को मे भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर, कई दफा ऐसा होता है करना नहीं चाहते और कई दफा नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज देयर. क्योंकि कई दफा क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये तो हमारी फैमिली का रूल है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनसे कन्वर्सेशन हमारी होनी चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं. तो सही है ना ये? बिल्कुल ठीक. आपने एक और एग्जांपल और आपने और कौन सा पॉइंट बताया था? एक को आपने बताया कि stay separate and live together. Family oriented actually. You family oriented person, which is very good. इस पे थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि हमारी नई जनरेशन में इंशाल्लाह we'll try our best to bring एक बेटी भी यहाँ को लेके आए, उससे भी ऐसे सवाल करें कि what she wants, ताकि हम दोनों साइड की चीजों को आपके सामने रख सकें और उनका नुक्ता नजर पेश कर सकें. मैं बहुत वसूख के साथ कह सकता हूँ कि माशाल्लाह आप सबके भाई बहन बेटियां और बेटे हैं. So you know majority of it. We are just trying to bring out some of the main issues जो दरवाजे के पीछे रहते हैं. We are trying to bring it open so we can tackle them properly ताकि आपको आने वाली नस्ल से कोई प्रॉब्लम ना हो और नई नस्ल को हमसे कोई प्रॉब्लम. वो कोई चीज चलती है, वो चलती रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन बिलाल आपने कहा फैमिली ओरिएंटेड. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. Like what family orientation means to you? Someone to do with kids. Okay. A lot of not a lot. Like some people I know they despise kids, which is okay, but like that's their own preference. They can't like be around it. They can't tolerate it, which is like for each their own. That's fine. But like for me, I would look for someone that like you don't get fun with all the kids, like acts like one of the kids, you know, just to be on good terms with them. Good in that regard. आपने एक और सवाल लिखा था बड़ा अच्छा पूछने के लिए बिलाल अली वास से. क्वेश्चंस तो ढेर सारे हैं. इस वक्त हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग stay on exactly उस पे. तो फिर उसके बाद अभी हमारे यहाँ पे कुछ मिसहैप्स कुछ इस तरह से हुए कि सेपरेशन जो बेसिकली शादी के बाद कुछ अरसे बाद ही सेपरेशन हुई क्योंकि वो दे वर लिविंग विद इन अ जॉइंट फैमिली. तो बड़ा अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन में ये हुआ था. मुझे इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा कि वो ही इज रेडी कि हाँ भाई विल लिव ऑन देयर ओन और उसके बाद साथ रहेंगे. और यहाँ पे जो सेपरेशन हुई उसमें ये प्रॉब्लम ये थी कि वो इकट्ठे रहना चाह रहे थे. लड़का जो था वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाह रहा था. उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग एक दफा करते हो कि हाँ भाई अब हमारे वक्तों की ना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से किया
मुझे नहीं पता, सब लोग हर एक के पास अपना एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, लेकिन सिंस वी आर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान और उन इलाकों में से है कि जहाँ फैमिलीज को जॉइंट फैमिलीज को बहुत प्रेफर किया जाता है, तो हम लोग अपने माइंड में भी ये रखते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली में रहना है, और अगर हम लोग अपने आप को भी रखते हैं, जब हम लोग उनको सेपरेट करते हैं अपने बच्चों को, तो हम लोग काफी अपसेट भी होते हैं, तो ऐसा तो होता है। Sure, sure. I feel like ऐसी बातें like beginning में शुरू होनी शादी से पहले हमें Yeah. डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन फिर वो बात है ना कि हमने शादी से पहले डिस्कस की, तो वी शुड एक्ट ऑन दोस थिंग्स टू। Exactly. तो जिस जहाँ जिनकी मैं भी जिनको जो मेरे ज़हन में लोग हैं जिनकी बात हो रही है, तो उनमें ये था कि ओके विल लिव ऑन आवर ओन, लेकिन बिकॉज़ ऑफ फ्यू फाइनेंशियल इश्यूज और सम इश्यूज they couldn't afford to live on their own। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट, आई डोंट नो कि किस हद तक ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कि अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की है, फॉर एग्जांपल कि आपने अब मेरे कमिटमेंट की आपने पहले कमिटमेंट की है कि ठीक है, ठीक है, we will live on our own। और अगर इन एनी केस फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस इट इज फाइनेंशियल और व्हाटएवर इट इज, अगर आपको पेरेंट्स के साथ रहना पड़ सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ, तो शी शुड बी द गर्ल शुड बी रेडी कि हाँ भाई ये हो सकता है, हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये हमें पहले हम लोगों को ये हर चीज का होना चाहिए। Yeah, definitely. Like you should talk about every situation that could possibly happen. The situation you have. बिल्कुल प्रेफर्ड एक होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। Exactly. प्लान बी, देयर शुड बी अ प्लान बी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे ये बात, क्योंकि ये चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना इन सब चीजों में। इन चीजों को देखते हुए मुझे एक छोटी सी एक और मिसाल ज़हन में आई है, जो मैंने यहाँ पे अमेरिका में 2-3 दफा विटनेस की है, कि जैसे बिलाल ने बात की कि हमें बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए, उन डिस्क्लोजर में एक बात ये भी थी कि 2-3 दफा हुआ कि उससे पूछा गया लड़की की उम्र क्या है, और लड़के तो उसी एज के हैं, कि इससे क्या फर्क पड़ता है? बिग डिफरेंस। आप पाकिस्तान, इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे आपकी एज है, आपके पासपोर्ट पे आपकी डेट है, तो वो कह रहे हैं डेट से क्या फर्क पड़ता है, और ठीक है लड़का कमाता है। बहुत सही था, बंदों की एज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली ये वर्ड सुन के आई वाज वेरी, बहुत कम होते हैं कि ओके आई एम अराउंड द सेम एज, विल इट बॉदर यू और यू वांट टू नो हर एज? डेफिनेटली राइट, age is important, and it's not like I'm around the same age. It should be transparent. ये प्रॉब्लम हो रही है, she's around the same age. They were not telling the exact age. You know what I mean? I've never heard. You never heard. Yeah, but Yes. that's like a red flag. Red flag for you. That's definitely. और ये भी था कि उम्र से क्या फर्क पड़ता है? Exactly. आप कुछ बता दो। I even heard that too, कि आप कुछ बता दें, तो it doesn't work out that way. We have to be transparent. We have to be honest. First of all, मौला अली के मानने वाले हैं। मैं तो वापस बात ले जाता हूँ कि जब मौला अली के मानने वाले हैं, तो हम गलत बयानी कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान में झूठ को झूठ नहीं कहा जाता, अमेरिका में झूठ झूठी है। चाहे आप उसको जिस मर्जी चीज में लपेट लें, झूठ झूठ ही रहेगा। तो उसको सामने मद्देनजर रख के मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि whenever you talk to somebody and approach somebody, please be honest. Be honest about the girl's age, be honest about the boy's age, because it will come up. आपको पता है, बहुत जरूरी है, बहुत जब जरूरी है। चीजें क्योंकि जब आप एक रिश्ता कायम करना, तो रिश्ता सच की बुनियाद पे होना चाहिए। rather than हम बातें छुपाएंगे कुछ करें। फिलहाल एक और
think चाहोगे कि स्टेट गुड वेरी So ये भी एक बिलाल दिस इज अ वेरी बिग इशू क्योंकि होता क्या है कि वो शादी वो कर लेते हैं पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी आपकी वाइफ जो है शी शुड स्टे होम आई हैव सीन दीज इश्यूज टू I don't think that's my parents. नो If I mean, to be blunt, I'm sorry. that's your plan But like- you're right definitely सच बोलते हैं कि इसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ लगी ये है क्योंकि हम ऑनेस्टली अगर आपने ये बात कही मुझे अभी ये बात कही पेरेंट्स की जगह नहीं है बोलने की तो बहुत जोर से धक्का लगता है honestly I apologize. no Sorry. I'm telling my viewers the truth कि धक्का लगता है जब बच्चे इस किस्म की बात करें इट्स नॉट लाइक यू आर टेलिंग की बात हो लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग एवरीवन कि भाई हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारी ये जो जनरेशन है इट्स डिफरेंट आपको बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग वी शुड टेल एवरीवन we should चला तो हाँ and people obviously क्या बोला you know what I'm saying Something out of you. so that's what we are trying to do here कि हम ये बात बोल रहे हैं कि हमें कैसा फील हो कि अगर इस तरह से बात हो क्योंकि हमारे जो जहाँ से हम आए हैं वहाँ हम लोग इन चीजों को सुनने के आती नहीं तो ये बातें करने का मकसद भी ये है कि हमें पता हो कि हमारी यूथ जो है वो क्या सोचती है बार बार मेरा कहने का मकसद ये किसी के घर में लड़ाई डलवाना कोई मकसद नहीं है या हम लोगों का ये नहीं कि हमें हर बच्चा ऐसा सोचता है लेकिन एक एवरेज हमारा जो बच्चा है उसकी सोच बेसिकली ये है तो आपने ये कहा फिर जो नेक्स्ट जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिजाब के बारे में आपको आपकी प्रेफरेंस क्या है कि वो हिजाब हो या ना हो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा honestly हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं it is a big issue in community when you're trying to put two people together one of the question comes up I feel like it's a very touchy subject. no, yeah that's what we are talking about it is a very touchy subject तो हम लोगों को ये भी देखना है ना कि बेटा हमारी यूथ क्या चाह रही है So I mean I can't speak for everyone. No, Like no. I know some people that want no, their no, wife let's not stay with you let's stay like with me you personally, I would prefer she wears a hijab, but I'm not gonna force it on her. At the end of the day, it's her decision. But so जब आप माँ बाप आपके लिए कुछ ढूंढने जाते हैं so it is not your requirement that she has to be hijab no, it's not a requirement. she But cannot I be non-hijab but you prefer I prefer hijab, but like say she doesn't feel comfortable, she doesn't want to wear it, I'm not gonna force her. I'm not gonna be like stay at home or you're not if you don't wear it. good very good ये हाँ मुझे एक अच्छा लगा ना कि हाँ भी बच्चों में एक ओपननेस भी है क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जो देखा गया जो हिजाबी लड़कियां हैं ऑनेस्टली मैं बार बार उनका जिक्र पहले भी जब हम लोग 3-4 साल पहले शो करते थे उसको जिक्र करते थे कि जो हिजाब करती हैं ये लड़कों की होता है हमें नॉन हिजाबी लड़की चाहिए दैट्स अनदर थिंग जो बहुत ज्यादा इन है और माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा बिलाल ने कहा शुड बी हर प्रेफरेंस और क्योंकि हम लोगों को अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं कि हमें सिर्फ हिजाबी चाहिए देयर आर किड्स डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स में होंगे जो वांट हिजाबी एंड देयर आर मोर किड्स जो कहते हैं हमें हिजाबी चाहिए ही शुडंट बी डूइंग हिजाब राइट so it should be I really like this thing how it should be her preference कि how if she is religious so she should religious is Well, I've heard stories where like guys are like force it upon their wife. I don't want something like that. definitely मेरा बेटा according to Islam you cannot force somebody to either Exactly. wear hijab or not wear hijab because when a woman becomes adult it's her decision because she's responsible for hereafter. मैंने ये भी लेकिन देखा है जो लड़कियां हिजाबी थी शादी के बाद husband like I don't want to wear hijab. I've seen that too. Yes. बिल्कुल ऐसा हमने खुद देखा बिल्कुल ऐसा हमने भी देखा experience भी किया बिल्कुल correct. Again that's a preference coming from husband
and their mutual understanding. Again, at the end of the day, both are adults and both are Muslim. Both understand the consequences of not wearing hijab. And inshallah, Allah सबको तौफीक दे हिजाब पहनने की. जो नहीं पहनता, अल्लाह उसको भी तौफीक दे. जो पहनता है, उसको तौफीक दे. और ये कुछ चीजें हम लोगों की बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ, हम लोग की डिस्कशन करने का मकसद सिर्फ इस वक्त ये है कि हम जो अपने आप को एक कॉल में रखते हैं मन के नहीं हमारे बच्चे को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, या हम लोग सिर्फ हम लोग पाकिस्तान या इंडिया से हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है, अब हमारे बच्चों को फॉलो करना चाहिए. सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चॉइस के तौर पर हम लोग यहाँ आ गए, और कई लोग अल्लाह का शुक्र है हम जहाँ रहते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि मुझे जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत अपना मुल्क याद आना, अपने लोग याद आने. तो मुझे किसी ने एक बात कही थी कि जहाँ अल्लाह ताला लेके आते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करके वहाँ पे रहते हैं और गिले शिकवे नहीं करते. तो वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने आप को चेंज किया कि नहीं जहाँ रह रहे हैं खुशी से रहना है, अपना मुल्क अपनी ज़िंदगी बहुत याद आती है, लोग बड़े याद आते हैं. लेकिन फिर जब हम यहाँ आते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर चेंजेस भी अपने बच्चों के मुताबिक लानी पड़ती है. अब जिस तरह से बिलाल इतनी अच्छी हमें बातें बता रहा है, अपने क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. अरे आप कोई और क्वेश्चन करना चाहेंगे बिलाल? आप कोई बात करना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, चलो. Actually, no, I do have a question. Why is it that there's a certain age you have to get married? Why is it a number and not maturity level? Okay, Barbara. Actually, this will take back to Islam की जो teaching है. What Islam teaches us, whenever a man or woman become adult, they should get married. The reason is it saves them from haram things. Because you know that when you look at some woman without hijab, without any relation, you are committing a sin. So to save you from that, Allah tells us to get them married as soon as possible. अब अगला सवाल उसके साथ दूसरा जो आता है, oh, but I am a student, I don't make enough money. लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला खुद वादा करता है कि रिज़्क, I mean, I am the provider. I shall provide to you. So a person should not be worried about who's the provider. The man who provider, we don't even have anything to provide to anybody. It's Allah's blessing through us that we provide food to our family and a complete faith. That's the reason why it is intended to be have early age marriage. So what is early age marriage? I'm not saying get them married at 16 or 17. No, that is a proper way. If I actually offered to my kid that, when he turned 18, let's Hussein, get you married. He said, I don't have money. Who asked you for money? I said, get married. And, she wanted to go to school. Let her go to school. You want to go to school? You go to school. Keep going to school, but that should not be stopping you from marriage. Should not be stopping you to further your career, either as a man or as a woman. Right? बात तो आपने बिल्कुल बेसिकली यही है कि हमारे ये बिलाल का इतना अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि क्यों हमारे पास सर्टेन एज है, सर्टेन एज बेटा इस सेंस में हम लोग इट्स नॉट लाइक ओके 25 इज द एज, 26 इज द एज. हम लोगों को हम लोग एक्चुअली ना, अगर आप I don't know where to start is कि हम लोग जब अपने दीन की, when we talk about our religion, जब अपने दीन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कल्चरली भी ऐड कर दी है अपने, बहुत ज़्यादा. और हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हम लोग गुनाह से बचें, राइट? गुनाह से बचने के लिए बेसिक ये है कि जब आप एक सर्टेन एज अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है वो एज है, so why don't we get married and do it halal way rather than doing any haram things? Well, I want to touch on two things, guys. Pehli cheez hai you were talking about is get married, save yourself from haram, all that stuff. But what if one of the individuals, whether it be the guy or the girl, are not mature enough? Because I know people that are 26-year-old that are immature and would not be able to handle it.
What about people like that? Or what about the guy who's 19 years old and he's mature, acts like he's 30? Very good question, Ravita. Beta, it is decided by the parents. If a person is not mature, so usually jab Islam talk about maturity, it's talking about a person is mature enough. They didn't put a certain limit that when you get 18, get married. When you are 16, get in married. this day and age, I see like 23 to 25. That's like the age where you're supposed to get married. What if someone's not ready mentally? I'm not talking about like mental illness. I'm talking about like No, I understand. Like, Your maturity, I understand it comes with experience, but the time. But you are correct about that. Making that maturity age could be 20, could be 27, could be 21. Like you said, a 23-year-old act like a kid is not mature. Guess what? He's not getting married anytime soon because if he's not mature enough for taking care of the family, but the pressure would be on his elders and why should marry you? Why should marry you? He could be 27. Why should marry you? If he himself is not ready. बेटा आप ready होना किस चीज को हम कहते हैं? And first of all, it's maturity for the mind. What is the maturity? What do you think is he's not mature enough about what? Don't you think it's an internal decision to decide something? Like, I'm not saying in my situation. I'm talking about it's okay. Like in general, like I see a lot of families like pressure their like the guys like their friends. My shadi can eat, my shadi can eat, but graduate very shadi. What if he himself is not ready? He's not mature enough. हम maturity को मैं भी यही जानना What अच्छा question है? What is maturity? It's a very wide term. Is that something someone from the outside decides for you, or do you decide that yourself? You decide that yourself. Absolutely. Then why is there pressure coming in from outside? वही तो मेरा बेटा question मेरा ये है कि आप maturity को कैसे define करें? What do you think? It's internal. Just like no. It's when you're ready yourself. बेटा ready yourself. बहुत सारे बच्चे हैं they won't be ready till 40, 50. Yeah. बहुत सारे मैंने देखा है they are not ready. They are old enough and they said no, we are not ready. Commitment. Is that something they're saying to you, or is that actually? बेटा आप मुझे बताओ how you what do you mean by maturity? Maturity means commitment. They are not ready for commitment. I can kind of like segue this a little bit into more mental health. We can talk about that too. Mental health. That's a totally different topic. नहीं segue mental health जो है ना मेरा बेटा देखो हम बातें कर रहे हैं maturity level. What is a maturity? पहले तो हमें उसको define करना पड़ेगा कि what is maturity? How would you define a maturity? उसके लिए हमें एक बार रखनी पड़ेगी. Sure, please. So what I was saying, so when the mental health, like they say, like in this day and age, like there's like I'm not talking about Muslims. I'm just talking about people in general. They say like, oh, if you can't love yourself, how are you gonna love someone else? Like when it comes to dating, love, and all that stuff. So if we say that into this, if a guy doesn't love himself or a girl doesn't love himself, how is she expected to take care of her family? Or how is he expected to take care of them? Okay, good point. What I would say is there's some inherent issue of the kid's upbringing. If a person doesn't love himself or herself, there's some issue. There could be psychological issue with it. That could be a mental condition. That could be a mindset. That could be treated. That could be something. I don't think of that as a mental issue. I think of that as just you learning yourself and you figure out who you are as a person. उसके लिए what I think is कि it just depends आपकी upbringing जो है आपके घर का माहौल कैसा है ये बहुत ज़्यादा depend करता है. A person can be matured much quicker. अगर आपके घर में घर के आपको क्योंकि a kid is just like a plant. अगर आप एक plant को ध्यान रखोगे ना तो अब देखो किस तरह से वो बढ़ता है. और वो plant जिनका ख्याल नहीं रखा जाता वो जल्दी not everyone has that perfect. यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ये फिर यहाँ पे आता है ना कि अपब्रिंगिंग मैं किसी के अपब्रिंगिंग पे बात नहीं कर रही हूँ कह रही हूँ कि कैसे उनको घर का माहौल कैसा मिला. But they did not have the proper nourishment. But it's not their fault. No. We are not saying that. So what do they do? Like they're 26 now and they still are figuring out who they are as a person. Why is there pressure coming from outside watching? Don't you think it messes with the person's individual? Like, is there something wrong with me? Like, I don't know who I am and everyone's telling me to get married. हम लोग
being in a community हमारे साथ ये है कि हम लोगों ने एक अपने ज़हन में बनाया हुआ है कि ओके इस एज तक उस बच्चे की शादी होगी. I have seen my Well, example. why is that a thing? क्योंकि बेटा this is how we grew up. मैं आपको यही तो कहती हूँ हम लोग अभी मैं तुम बात एक one thing I'm telling again and again कि we were born and raised in Pakistan, we came here. ठीक है हम लोगों के ज़हन इतने हम लोग क्योंकि we were born and we were raised in that community हमारा ज़हन वहीं पे है हमें ये लगता है कि हाँ भाई हम बच्चों और ये ज़रूरी है कि हाँ भाई they should settle down in their life. I feel like that mindset comes from the olden days. Life expectancy like 40, 50, that's when people were that. I feel like now with the life expectancy going, like being married at early age shouldn't be like such a big deal. No, I'll give you a good example. I'll give you a very good example regarding that. I got married late. How old are you? 30. It's way too late. But what do you For think? you maybe, but Huh? for someone else, it might not be. No, I wasn't not ready to get married. Because just like that, I was not mature enough. But according to your criteria, I think I was not mature enough. I was not ready to settle down. That's the word is settle down, not maturity. Settle down. Maybe Let me finish. So, in that regard, if you ask me today, I will get married at the age of 22, 24. If I was given a chance again, not later than 24 or 24 would be the late. Why? I tell you why. I tell you the reason why. Hear me out. Today's age, our kids need our company. The parents company? yes. Kids, yes. Okay. For proper nourishment, they need their parents' company, be properly nourished, be a friend. Guess what? I have a generation gap with me and my kid. Toward that, I would have taken my age back because I love to spend time with my kids, go out, play ball with them. You know, But you're comparing yourself to your youngest. How old is your oldest? oldest is still very, How old is your oldest? 27. And how old are you right now? I am 60. Big difference. Even though I am friends with my daughters, but still, at the end of the day, I miss it. I miss their childhood because I was so busy working. But again, if I got married early, I have seen them. Let me ask you. You Sure. said you want to get married at 22, 24. Yes, When you were 22, where were you? What were you? I was still going to college. You were still going to college. If Yes. you got married at 22, how would you handle going to college? Oh, if my parents are like me right now, like I said, I offered that to Hussein. No, but I'm talking about your exact situation. Oh, I would have not get married because I didn't have nothing. My parents were not here. I was here by myself. I was a lone soul. I was just me, myself, and I. Didn't you say that's the exact reason why? Like No, marriage because shouldn't be I said if I have given a chance, and I was not a good follower of a Muslim back then. I can tell you that too. So I would have not committed a lot of sins if I was so close to Allah as I am today. I wasn't going that direction. No, I'm just saying that He is telling you the reason. the reason. I'm telling you the reason why I didn't get married. And at the end of the day, I would have married your Nashin otherwise. If I could have married 22. But again, at the end of the day, it was late. I should have married. That's what I'm trying to tell Sam. Sam, please get married when you are 23, 24. We are debating. We are putting that to his head. He was since 16. We are telling him, and he's kind of prepared. He's kind of know that, yes, I'm going to get married soon. When Allah wants. But just like you said, 30-year-old, guess what? If I had an age, let's say I have a kid 5 years ago, for example. I had another kid. I was 55. By the time I'm 70, he's in high school. Do you think I would have seen his high school graduation? May not be. So in that regard, getting married in an early age, you get to enjoy your offspring. Having children is a big deal too. Why? It's expensive. No, my beta, no. Absolutely not. That's a wrong myth. We gotta have a tawakkul on Allah Ta'ala. We gotta have belief in Allah. I believe in Allah Ta'ala. So But when you come to the who we facts- are, you think we feed our kids?
That is the biggest myth, mera beta. It's Allah who provides through us for our kids. So having kids is expensive, is a big no-no. It is, you are correct, that's a materialistic thing, but it's Allah's blessing to one's soul to propagate, to bring more Muslim, good Muslim, and people who could be part of Imam Zamana. There is nothing wrong with that. So let me correct you again. We are nobody to say that we raise our kids. It's Allah who provides us the energy and means to raise them. Can I save any money from a kids' school? None of my kids. MashaAllah, they all graduated. How? I have no clue. I have no clue how they graduated from good school and good colleges. I wasn't talking about like No, having children in life. I'm talking about just having a kid. Because you were worried about your upbringing. No, I'm talking about like mom goes to hospital, has a kid. How much is that bill rate? If you know that if you don't make any money, it's free. Do you know that? But I don't think everyone has a goal of not making money. No. Like say graduating college. But the thing is, Bilal, what Alibaba is trying to say is that we don't have tawakkul. Do you know what tawakkul means? That we कि हमें अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए. We should have यकीन होना चाहिए, but you also put yourself in a position. बेटा फिर बात Allah will help put you in that position. बेटा नहीं, देखो मेरी बात सुनो. अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 70 कदम 7 कदम बढ़ाऊंगी. तो अब एक दफा अल्लाह तरफ जाते हो ना, अल्लाह के लिए जब हम देखो फिर ये पॉइंट, ये बहुत अच्छे पॉइंट है. वी शुड टॉक अबाउट दिस थिंग कि हम लोग अल्लाह ताला की निस्बत अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं. जी. We don't have. It's just something that I can tell my youth, I can tell you, I can tell all the kids कि हमारे साथ ये है कि we think, okay, we are earning money, right? That's what we think. We have to have certain amount of money to have kids, to get married, to all those things. Why don't we have tawakkul on Allah? We don't have tawakkul. What do you understand what tawakkul means? Yeah. Tawakkul means कि हम अल्लाह ताला पे यकीन, believe हो, हमारा strong belief हो इस चीज पे कि Allah Ta'ala will provide us. But I feel like there's two thoughts to it. Like the thought that you're talking about, and then me, I believe in Allah, and I believe Allah will put me in a position to do that. Because like I'll give you an example. Like growing up, going to school, mom and papa didn't save any money for us to go to college either, right? Same thing. Now, I was freshman in high school. I was like, Mom, I want to go to Stanford. Papa, I want to go to Stanford. Who's gonna pay for it? Because I knew the way our finances were growing up. But Mom was like, don't worry, Allah will take care of us. Allah will take care of us. Yes. They said that for 4 years. And then when I was a junior going to senior, applying for school, same thing. I was like, if I get into these schools, who's gonna pay for it? And then if you're talking about, sorry, I'm cutting you off. If you're talking about here in the States, there are so many programs. You can get a loan. You can get so many things. I understand that, but like just the fact that for 4 years they said Allah will take care of us. Allah will take care of us. When we got to that point, I didn't even apply to some of these schools because they were too expensive. You should have. But I didn't want to put my family to financial difficulty. Better, it would be on you, not on your parents. So right now, I'm going through school. I'm paying for myself, and I'm not going through any loans. I'm debt free. Great. Why would I want to go into debt? Better, that's okay. That's why a person goes to good school. Why? What's the reason behind it? What do you think? Why a person goes to Stanford rather than San Jose? What's the difference between those two? If you're gonna ask me, I don't say there's a difference, but that's an opinion that no one agrees with. Okay. बेटा इसलिए कि आपने कॉलेज अपना अटेंड किया उसके बाद you're saying that. If you were in high school, you won't understand this thing. You understand what I'm saying? जब आप उस एक एज में होते हो, जब आपने एक्सपीरियंस किया, now you're saying it with your experience. जब आप पहले थे, you were more emotional. मेरा लेकिन ये point है, like if you keep saying Allah will help us, but you're not doing anything to put yourself in a position to do it. No. You're not saying this at the tawakkul. No. That we have to work for that. That's what I'm saying. Yes, definitely. So like if you have that, like Allah will help you like pay for the baby, but you're not like saving up or you're not like doing the extra to be able to afford that, it's not gonna work. I know, but the thing is, बेटा, first of all, आप ये देखो, अगर आप इस point पे आ गए हो, what we are talking about, if you follow Ahlul Bayt, right? We are follower of Ahlul Bayt. We are follower of Prophet Muhammad. We are follower of Maula Ali, Bibi Sayyida Salamullah Alaiha.
then when we talk about them, अगर हम उनकी लाइफ को पढ़ें और उनके जो हमारे लिए उन्होंने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, या हम जिस तरह हम लोग अगर अपने आप को, we cannot be like them, not at all, no I'm not saying that, लेकिन हमें उन्होंने एक वो दिया है, हमें प्लेटफॉर्म दिया, we should be like this, true moment should be like this, ठीक है, एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है। अब हम लोगों ने अपने आप को क्या करना शुरू किया कि हम लोग खुद अपने आप को सरवाइव करने के लिए, हमें लगता है हमें सर्वाइवल के लिए ये सब चीजें चाहिए, हवा पानी और खाने के अलावा हमारे लिए ये सारी लग्जरीज होनी चाहिए इन आवर लाइफ टू सर्वाइव। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम लोग इस पॉइंट पे हमें वो लग्जरी जो हमारी नीड नहीं है, जो हमारी वांट्स है ना, वो हमारी नीड्स बन चुकी है। हम लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत डिफरेंट बना लिया हुआ है, हम लोगों ने अपनी लाइफ को हालांकि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट, अगर हम चाहें तो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने कहा ना किड्स आर एक्सपेंसिव, सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देंगे। एक जो स्ट्रोलर है, इट कॉस्ट $70, $80, maybe it's too expensive, $100. On the comparison, there is another stroller, it is doing the same thing, $1,500. If you have the money, yeah, of course you're gonna go for it. There's some people just that is simple. See, that's the word. where I'm bringing you. That's where what I'm talking about is complete basic, just diaper, baby food, all that stuff. Because again, let me tell you one thing. When we talk about these basic things, honestly, मैं आपको अल्लाह ताला का वादा है कि जब जो कोई आता है इस दुनिया में, अल्लाह ताला अपना रिजल्ट साथ लेके आता है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने $100 की ग्रैको की वो नहीं लेनी स्ट्रोलर, हमने 1500 की स्ट्रोलर लेनी है ना, तो then kids are expensive. You think it's stupid, but I'm talking. I know there's people out there like that. Yeah, I have seen those kids. I was talking to this. We have those kids. Yes, we have those kids simply, and I'm talking about this girl, and she was just like, I am debating to get Juna or Luna. We are not going to name those. It's just like $1,500 stroller that's going to work just for a year. Okay, yes, kids are expensive. A girl needs a expensive bag or expensive shoes or expensive dresses. Yes, life is expensive. But when we, follower of Ahlul Bayt, follower of Maula Ali alayhi salam, follower of Bibi Fatima Zahra salamullah alayha, if we are true followers, our life should be Alhamdulillah. We should say Alhamdulillah and everything will be everything. So you saying, because this is your opinion, this is my opinion, right? That's what we are doing. We are just talking. Whatever you think, you are talking your mind, and I'm talking my mind. We got stuck on having a baby. It's not about having a baby. No, not at kids all. are expensive. Kids are expensive. We talk about like 15 minutes on that. No, yeah, no. Getting married is expensive for some people. It is, but honestly, that's a whole other topic. Someone wants an extravagant wedding versus something low key and small. Simple. I know. It's personal choices. And then who pays for it? Who pays for it? All depends on everything. That's what I'm saying. Like all these questions pop up, like no one talks about it. That's and then when it happens, it's a big mess. No, it's not a big mess. Arguments. I totally agree with you. बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हम लोग इन चीजों पे खुल के बात नहीं करते. You know? Well, we are not open up to it. And it's all taboo. We're not supposed to talk about it. Yes, no. Let me tell you, हमारा प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा रह गया. मैं बस एक छोटी सी चीज पे एंड करूंगी, और अगर हमारा बेटा मानेगा तो नेक्स्ट वीक पे हम इसे बुला के बड़े मजे की हमारी डिबेट हो रही है. और अगर ऑनेस्टली आप में से कोई इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहता है, तो अब तो टाइम बहुत कम है. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे बात होगी. जो चीज जिस पे बात करते करते मेरे जहन से वो निकल गई बात कि हम बात किस चीज पे कर रहे हैं. देखा था, हम बिल्कुल मैंने वो छोड़ दिया कि मुझे ये था प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हम इस चीज पे बात एंड करना चाह रहे थे कि सिंपल इज दिस कि अगर हम लाइफ को नहीं, मुझे याद आ एग्जैक्टली, मैंने 2 शादियां अटेंड की. एक शादी हमारे सेंटर में हुई. इट वाज अ गॉर्जियस सेरेमनी. लेट मी टेल यू, माशाल्लाह बहुत मुनासिब डेकोर थी, बहुत मुनासिब हर चीज थी. दुल्हा दुल्हन को ढेर सारी दुआएं मिली, शादी हुई. और सेंटर में बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कहूंगी जो सेंटर्स में शादी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ. और फिर एक शादी मैंने उन्हीं दिनों में अटेंड की. इट वाज अ थीम्ड वेडिंग.
500 प्लस गेस्ट, और उस शादी को शादियां दोनों थी और माशाल्लाह दोनों बेटियां अपने घरों में खुश है, दोनों यानी कि कपल्स अपने, जो हम लड़की वालों की तरफ से तो इसलिए मैंने कहा बेटियां खुश है, दोनों कपल्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अपने घरों में है। लेकिन मैं तब भी ये कह रही थी, एक शादी सेंटर में हुई और वाज अ वेरी सादी सी और बहुत खूबसूरत सेरेमनी थी, बहुत अच्छी थी। और दूसरी माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। फिर बात यही आ जाती है, लाइफ को सिंप्लीफाई करें तो लाइफ सिंप्लीफाई हो सकती है। फिलहाल एक इट्स एक्सपेंसिव, सो इट गेट्स एक्सपेंसिव। As you want to be. हम अपनी जो वांट्स हैं उनको जब नीड्स बना लेंगे तो डेफिनेटली ग्रेको की स्टोर में भी गुजारा हो सकता है, राइट बना। और डूना वो जो 1500 आई नो, आई एम टेलिंग यू। सो हम लोग गुजारा करने, जिंदगी गुजारने की बात है, हम अपने लेवल ऑफ लिविंग यहाँ रखें या यहाँ रखें, इट जस्ट डिपेंड्स। प्रोग्राम खत्म होने की बिल्कुल हो गया है, तो लास्ट मिनट है। बिलाल आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप आए, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या फॉलोइंग वीक जब भी हमें मौका मिला इंशाल्लाह फिर हम लोग बात करेंगे। डेफिनेटली फीडबैक हुआ को मिलेगी इंशाल्लाह, मुझे बताएंगे कैसा। I had a question for everyone here. I was thinking about starting a podcast, talk about like growing up in America as like a Shia Muslim kid and all that stuff. Is that something you guys would be interested in? I don't know. Just any feedback would be appreciated. आप फीडबैक जरूर दें, आप चाहे अपने वो फेसबुक पे दें या यहाँ मौलाना नीरुल हसन के पास या हुमा के पास अगर आप भेजना चाहें तो जरूर फीडबैक अपनी दें। बहुत अच्छा काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा जब इसने ये बोला, क्योंकि वी रियली नीड टू लिसन टू आवर व्यू, दैट्स द थिंग। आपको बुलाने का मकसद भी ये था कि देखो आपने अपने पॉइंट्स बताए, हमने अपने पॉइंट्स बताए, तो इंशाल्लाह अब जो है मेरा ख्याल है प्रोग्राम का थोड़ा सा ही टाइम है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह विल हैव यू अगेन if you इंशाल्लाह we'll have you again। मजा आया आपसे डिस्कशन करके, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी और भी किसी लड़की को भी हम बुलाएं, someone is ready। अब तो टीवी पे आने के लिए सब तरह घबरा रहे होते हैं, बट थैंक यू बिलाल, थैंक यू। तो इंशाल्लाह बात इस पे हम लोग फिर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही एज यूजुअल ट्यूसडे है, हम अपने तमाम रूमीन के लिए इस सूरह फातिहा का हदिया पेश करेंगे और 3 दफा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू। और एक और छोटा सा वजीफा हम करते थे और उसको जारी रखेंगे। आप तमाम व्यूअर्स की, हमारे चाहने वालों की, हमारे जानने वालों की, आप ही चाहने वालों की मुश्किलात की दूरी के लिए, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील के लिए 5 दफ़ा अम्मा युजीब। बिस्मिल्लाह। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआओ व यक्शिफुस सू। 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 परवरदिगार हमारी फिज़िकली से इबादत को कबूल फरमा और हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, और जो बीमार हैं इस दुनिया में सबकी बीमारी को दूर कर दे। जो बेरोजगार हैं उनकी रोजगार को साझा कर दे। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं खुदा ताला उनके लिए मेहरबानी अता कर, उनके लिए बेहतरीन सूद अदा कर, और जो कर्जों में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके कर्जों की बहाली का समा पैदा करे, और अल्लाह तमाम बीमारों को बीमारी करबला के सदे में इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब के लिए खुदा हाफ़िज़।